We're good, sir. How are you? Good, yeah, good. Everything is good. क्या क्या था last में? So conditional probability. Conditional probability. Probability event A happens given that event B has happened will be always less than probability of A happening. Unless they are independent events, then the probability will be equal, right? So if what is the okay? Let's say for a crude example, the probability that Anubhav is in the class is how much? 1 out of number of people here. Probability that he's in the class given 20 are boys. So the probability is 1 out of 20. So 1 out of 20 is definitely greater than 1 out of all the students. So probability of A given something is something else has also happened increases the chances of that happening because something is already given. More information is given to you, right? So how is probability of A given B defined? What is probability A given B? इसे बातें कर चुके हैं हम. Mathematically, what is the probability of the event A given event B has happened? Probability is the intersection of A and B upon the probability of B because now the set changes, the sample set. You remember sample space? The sample space has changed. It has become PB instead of the universe. So if A has to happen, then it has to happen along with B because B is given to have happened now with respect to probability B. Clear? Now that tells me that probability of A intersection B is nothing but probability A given B multiplied by probability of B, correct? If I have independent events, then what is probability of A given B? It is the same as probability of A. The probability of A happening does not change, which makes the equation to be that intersection of A and B, if the probability of intersection is the product of these two probabilities, then I will have A and B independent to each other. Clear? This is the only definition that you require in order to check whether the events are independent or not. You clear with this? Yes? I need some verbal cues from you. Yes, sir. Sir, can you please explain the red part you have written? Independent probability A by B and A is independent of B. A's probability will not get affected by B. So if B has happened, probability of A will remain the same. And hence probability of A given B will be the same as probability of A when B had not happened. Right? That's all. So we've talked about what are the definitions of probability. We've talked about independent events.
versus the joint events. There are two kinds of experiments. The experiment can be a fair experiment or it can be a rigged experiment. What's the difference between fair and a rigged experiment? Let's say experiment of tossing a coin. You can get either a head or a tail. That's a sample space. In case of a fair experiment, the probabilities of each of these events happening is equal. In this case, 50%, 50%, right? But in case of a rigged experiment, maybe I have made the weight of the head side heavier, which means it will always land on the head majorly, and hence probability of tail may be, let's say, 70%, and head will be 30% only. So that is a rigged experiment, wherein basically the probability of each event is not equal. Anyway, we won't be talking about these much. Let's try this question as a kickoff for today's class. Can you define this experiment? Anubhav, what is the experiment? So sir, we are tossing a coin, and if it's head, we'll toss the coin again. But if it's tail, we'll throw a die. Tossing a coin, which means I can either get heads or tails. If it shows head, then I'm tossing again, right? Which means if it is head, then I can further get either another head or a tail. But if it is tail, then I am rolling a die, which means I can have those 6 options. Agreed? So this is the experiment. This is the experiment. The question is asking you conditional probability. The conditional probability that a die has a number greater than 4 given that there is one tail, right? So in order to find this additional probability, by the definition of it, what will it be? Probability that number is greater than 4 and there is one tail upon probability there is one tail. That is the definition. Alternatively, you could have gone logically and said that die greater than 4 क्या मतलब है ये दोनों लोग, right? Out of one tail कितने हैं?
These 7 people. Do you see that? So the answer will be 2 by 7. 2 out of the 7. Yes or no? Unmute yourself. Yes, sir. No, it wouldn't be like this. This is wrong because the events are not what we call equally likely. इन सब के होने की probability same नहीं है. देखो starting में where is it? The probability of getting ahead is half. 50% head आ सकता है या फिर tail आ सकता है in 50% of the cases. Do you agree? Do you agree? Yes, sir. Once you have rolled ahead, अब क्या करना है? फिर से head या tail चाहिए. उसकी भी आने की probability half है each. But if you've gotten a tail, you have possibility all these 6 and these all 6 are equally likely. Dial को roll करने पे ये 6 में से कोई भी एक आ सकता है equally likely, which means the probability of each of these happening is 1 by 6. Agreed? So effectively, if I talk about these two people happening, 5 के होने की probability is half probability tail आए और फिर 5 आ जाए. This is the probability. इसके होने की tail आए और फिर 6 आ जाए. Do we agree? So what is the total probability? It is 1 by 6 of these two events happening together. Either of these two events happening because I have added the probability. अगर ये दोनों ही होने होते तो that is not possible. Either of them will happen. Okay. So the total probability is 1 by 6. My intended probability, the numerator. What is the denominator? कि in 8 options में से I am only concerned with these 7 options. Correct? So either I will add the probability of all of these 7 options, or I can subtract of the probability of HH happening. Yes. So total denominator will be 1 minus S के होने की probability is half into half, half into half. So that will be 3 by 4. Agreed? So what is my desired probability? That will be 1 by 6 divided by 3 by 4. So वहाँ पे 1/6 नहीं होगा, 1/12 नहीं होगा. नहीं, half of 6 plus half of 6 is 1 of 1 by 6. Okay. ऐड कर दो ना तो 1 by 6 ही आएगा. Sir, can you please repeat? Where? Which part? Sir, from 1 by 2 into 1 by 6 and then again 1 by 2 into 1 by 6. Yes, so the probability of getting a T5, well, I'll write this in some other manner now. My sample space, if you see, the sample space is what? या तो I get 2 heads, पहला head, फिर head. Or I get head and then a tail, right? Right? Or I get a tail and then I could have 1 or 2 after the tail, or 3, or 4, or 5, or 6. This is my sample space. सर वो हेड टेल को ऐसे अलग क्यों लिखा है? क्योंकि टेल के साथ तो कोई डाई को रोल करना ही पड़ेगा ना. कहाँ पे? सर वो सेकंड ऑप्शन में सैंपल स्पेस के हेड टेल है वो. हेड ये वाला है वो. हेड के बाद जब टॉस किया तो फिर से टेल आ गया. अच्छा ओके. तो अभी पूछ रहा है कि इन दोनों के होने की चांसेस क्या हैं जब मुझे पता है कि एक टेल तो है ही उनमें इन 7 में से. So it seems like the answer is 2 by 7 only if all of these 8 possibilities had the same probabilities. But no. हेड और हेड आने की probability क्या है? Half into half. Can you guys hear me? So screen, हाँ. हाँ. हेड और हेड के आने की probability क्या है? Half into half. हेड और टेल again half into half. टेल और 1, टेल के तो हाफ है बट 1 के आने की 1 by 6.
इसकी 1/2 1/6. Same for these two people. As you can see, this probability is not equal to this probability, right? What does that tell me? That head tail ऐसा एक outcome आने की probability is 1/4, but tail and 1 आने की probability is 1/12. So head and tail is more likely than tail 1. Since these are not equally likely, it is kind of a rigged experiment, in which case we would have to take their individual probabilities into consideration and we can't just simply divide the count. First point. Second point, since I'm concerned about T5 and T6, which individually have their probabilities 1/12 and 1/12, I could have either of these two options. The probability is 1/6. 1/12 plus 1/12 will become 1/6. Out of the sum of all of these people, the sum of all of these 7 people, because यहाँ पे भी tail है और यहाँ पे भी सब में tail है. Now either I could add all of these 7 people, or from one I could remove the first person की होने की probability. So I did that. I subtracted 1/4 from it. That became the final answer. Are we clear now? Yes, sir. Yes, sir. By the way, question NCERT का है. सबने क्या रखा है question? Same. I've just copied and pasted. Let's try this question. Are these independent? Yes, कैसे sir. check करेंगे? Check कैसे करेंगे? Sir, वो A intersection B is equal to P of A into P of B. बस वो check करना है. Probability of A intersection B should be equal to probability of A multiplied by probability of B. Now, what is A? पहला event क्या है? Head appears. भूल के बताना क्या है, मुझे दिख नहीं रहा. Head appears on the Coin. on the coin. B क्या है? 3 on the die. On the die. For this, let's first define the sample space. Sample space में कौन-कौन है? A fair कौन है? H1 to 6, T1 to 6. Fair पहले coin और फिर unbiased dice, ठीक है? तो coin could be head with 1, head 1, head 2, head 3, head 4, head 5, head 6. यही options है? या फिर tail वाले हो सकते हैं. Tail 1, tail 2, tail 3, tail 4. This is my sample space. This is sample space. The sample space has how many people? 12 people. Are these all 12 equally likely? Are these all 12 equally likely? What is the probability of any of them happening? 1/12. 1/2 into 1/6. 1/12 is the probability of all these 12 people, and they are equally likely. Okay. Now let's find the probability of A. What is the probability of A? Head appears on the coin.
it is appearing in 6 instances out of 12. So can I say it's 6 by 12 or 1 by 2? Yes, sir. Now let's find the probability of B happening. B is what? A 3 on the die. So 3 on the die could be H3 or T3. There are 2 people out of 12. So that will be 2 by 12. Yes. What Yes, is sir. P of A into P of B? 1 by 12. Let's keep that separate. Now let's talk about probability of A intersection B. Intersection B. A intersection B means head appears on the coin and 3 on the die, which means I want H3. Head on the coin, 3 on the H3. If both of these things were to happen, H3 is only one item out of these 12. So that's the probability will be 1 by 12. Since the product of probabilities of A and B is equal to the probability of A intersection B, these two events are independent by the definition. Are we clear? Now let's talk a bit about Bayes theorem. किसको पता है क्या होता है? Bayes theorem. How many of you don't know? Raise your hand. Don't know. Consider that there are 2 bags, bag 1 or bag 2. Okay? Bag 1 has 2 white and 3 red balls, whereas bag 2 has 4 white and 5 red balls. One ball is drawn at a random from one of the bags. What is the probability that it's a red ball? Probability red ball will be how much? One by 2 into 3 by 5 plus 1 by 2 into 5 by 9. So getting a red ball would be either I can get red from bag 1 or red from bag 2. ये तो possibilities है. For red from bag 1, the probability will be 3 by 5. Do we agree, guys? Focus here. That will be multiplied with bag 1 भी तो लेना पड़ेगा. Bag 1 की probability is 1 by 2. So can I say getting a red ball from bag 1 is 3 by 10. Plus or means plus. उसमें क्या होगी? 5 by total कितने? 9. 5 by 9 for bag 2. So can I say if I add this up, I'll get the probability of red ball. Can I also find the probability of white ball? 1 minus probability red ball भी हो जाएगा by the way. नहीं तो उसको So क्या- why did you multiply 1 by 2 there? Because I first have to choose bag 1 and then choose a red ball from it. Okay. Choosing bag Okay, 1 sir. is 1 by 2 probability. I would have chosen bag 2 as well. ठीक है? In a more visualized format, this is how it will look. My first decision is to choose a bag and then a ball. This is like a T diagram that we found. Bag 1, bag 2. Red ball, white ball. Ball, white ball. Okay. Now on these white lines, I will put down the probabilities. Bag 1, probability of choosing bag 1 is half. Probability of choosing bag 2 is also half. Probability of choosing red ball within bag 1 is 3 by 5. White ball is 2 by 5. Red ball from the second bag 5 by 9. White ball 4 by 9. Are we clear? The diagram clear है ये वाला? Now if I have to know if I have a red ball, in that case I am focusing on either this red ball or this red ball, right?
In order to reach these nodes of the graph, I will have to go through bag 1/2 probability, and from here 3/5. Total is 1/2 into 3/5 because I have to do the whole structure. I have to go to bag 1 and then choose the red ball. I'll multiply. Or I could go to bag 2 and then choose a red ball. So I'll have to multiply these two. But since there was an or, I will add this up. That is how I get this probability. Clear? Are we clear with this? Aditi? Yes, sir. Okay. Similarly, I could have gone for checking a white ball as well, right? So all of these things become very clear. Now read further. So what this is saying is, if you know how many different balls are there in one bag and the other, you can find the probability of a white ball in bag 1, a red ball in bag 2, or in general a white ball or a red ball, right? You can definitely do that. Finding probability is not difficult. So what are you doing? You had bags and some balls in it, and you're putting it out and you're filling it out and asking me whether this is right or not. Okay? What if I told you that the ball that I have is red? Now tell me whether it came from bag 1 or bag 2. So what is this? This is kind of a reverse probability that I have done all the events. I found a red ball. I have a red ball in my hand. What is the probability that I took it from bag 2 and not bag 1? Are you getting it? You're going back in the process. The reverse probability, whenever there is reverse probability, we'll talk about Bayes theorem. So it goes like, what is the probability of bag 2 have been selected when I know it was a red ball? Try this. Now again, red means these circled probabilities, right? If you have the red ball, you're not concerned with the white ones at all for now. You're only concerned with these probabilities. Here the probability of this would be given by it is also a kind of given probability, but it is a reverse given probability. Simple kind. Or okay, if I asked you probability that the ball is red given it is bag 2, what would that have been? A red ball given it is bag 2. What is the probability? 5/9. 5/9 for sure. This is also given probability, but it is not Bayes theorem because you are going further down. Now, what would this probability be? Because you're going up now, going back. It's a reverse probability. Here, you would say that the probability is 1/2 multiplied by 5/9. This is when I could have had. This is basically, oh, by the definition, क्या हो जाएगा ये? Probability bag 2 and the red ball divided by the probability of red ball. Can I say this? By the definition of given probabilities, right? So what is the probability that ball is red and from bag 2?
Well, back to is half, and the red ball from it will be 5 by 9. Make sense? What will this be divided by? The probability of red ball. वो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं ये रहा ऊपर. You see that? You see that? What is that? Half into 3 by 5 plus half into 5 by 5. So that is the answer. ठीक है. Notice एक मिनट बस. notice how this is x upon x plus y. ऐसा ही तो कुछ है ये आंसर है ना? Yes. What will be 1 upon answer? X plus y upon x. Can I write it as 1 plus y by x? Can I write it? 1 plus, what is y? ये 3 by 5 वाला है ना, half into 3 by 5 divided by half into 5 by 9. So can I say it is 3 by 5 divided by 5 by 9, which will become into 9 by 5. Make sense? 1 plus 27 by 25. What does that give you? 52 by 25. Do we agree? This is 1 upon answer. So what will be what will the answer be? 25 by 52. So this is just another quick way of solving the question. कि 1 upon answer की बात कर लो, वो थोड़ा easy है. ठीक है? Are we clear with base probability? Base theorem? All questions भी करेंगे, don't worry. लिख लो इसको, लिखना है तो. Piyush, your video is on, but I can't see your face. Same with Somi Das and Amit and Mahima. Change the angle of your laptop. And Amit, you also change the angle. Are we good with this? चलें आगे? Yes, no, maybe. Yes, sir. एक ही एग्जाम होता है, कितने आलसी लोग हो यार तुम. चलो, let's try this.
So when I start, there are two things. Either the patient is COVID positive or the patient is COVID negative. Now, if the person is positive, the report could have been either positive or negative, right? And if the person is negative, the report again could have been either positive or negative. These are the four ways I can go forward with. ये डायग्राम बना लिया था सबने? अनम्यूट करो खुद को, ऐसे मजा नहीं. Yes, sir. हाँ, बना लिया था सर. Yes, sir. बना लिया. हाँ, ठीक है. क्या प्रोबेबिलिटी है द पर्सन इज कोविड पॉजिटिव? ये प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पे? 0.1. परसेंट. 0.01. हाँ, 0.1%. So 0.1% will come here. ठीक है. तो ये दूसरा क्या हो जाएगा? 99.9. 99.9%. ठीक है. This is 0.1. Maybe I write this down. 0.1% is 0.001. 99.9% is 0.9. 999. If the person is positive, उसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आएगी. उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 90%. 90%. But 10% go undetected. So this is 90%, 0.9, 10%, 0.1. नेगेटिव के केस में नेगेटिव कब आएगी? 99% are just 99. negative. The remaining 1% of 0.01 are positive. ये टेबल बन चुकी है. Now the question asking you, a person selected at random and given a test and the report is positive. Person is selected at random, given a test and the report is positive. So these are the two ways in which the report would have been positive. We want to know what is the probability that the person actually had COVID, which means I want this probability that move in this direction. Go here and then here, right? What is that? 0.001 into 0.9? 0.0009 other? 0.0009, yes. And it could have been that this positive was caused by a wrong or an error. In that case, that will have been 0.0999. So what does it probably become? 0.001. Divided by ठीक है, that should be the answer. इसको मैं 1 अपॉन आंसर करके ही करूंगा आई थिंक, या फिर ऐसे ही आ जाएगा तो 9 अपॉन राइट. दिस कैन बी फर्दर सबट्रैक्टेड, जो कि एक्चुअली यहीं पे दिख जाना चाहिए था. 3 अपॉन 3 प्लस 2 रादर 1 अपॉन 112. दैट्स द आंसर. यही आ रहा था या कुछ और आ रहा था? Okay. Let's try this question.
What's the answer? 3/4. कैसे किया? हाँ कैसे किया वो तो सर मतलब दो तरीके हैं। पहले तो मैंने वो किया 3/4 इंटू 1/6 अपॉन 3/4 इंटू 1/6 प्लस 1/4 इंटू 1/6। और दूसरा तरीका है मतलब उसने बोला 6 आ रहा है और 3 बार ही सच बोलेगा 4 में से 3/4 वैसे ही होना चाहिए। वही कहानी। Either 6 occurs or it doesn't occur. 6 की होने की probability 1/6, ना होने की 5/6। अब अगर 6 आया तो इसने सच बोला तो 6 ही आया होगा, और सच कब बोलता है? 3/4 ऑफ द टाइम। झूठ बोला तो 6 नहीं आया होगा, दैट इज 1/4। यहां अगर झूठ बोला विच मीन 6 आया होगा, 3/4 वो 1/4, और झूठ सच बोला तो 6 नहीं आया, 3/4। आर वी क्लियर विद द डायग्राम? आर वी क्लियर विद द डायग्राम? यस उसने बोला कि 6 आया है, 6 has occurred, which means it could have been a lie versus could have been the truth. The question is asking you, tell me that what is the probability that it was a true, it was truth, which means for truth it would have been 1/6 into the truth scenario 3/4, this whole divided by 1/6 times 3/4 plus the other probability when he could have said that it was 6, which is 5/6. He was telling that 6 did not occur, and he was telling a lie. That would be the answer. तो ये जो भी आ रहा है, 5/8 आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 1/6 सब में से हटा सकते हो, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये 3/4 3/4 से कैंसिल हो जाएगा, ये 5/4 5/3, 1 + 5/3 इज 8/3, उसका रिवर्स विल बी 3/8 to be the answer. Are we all okay with Bayes theorem? बताओ। भूवी, all good? अक्षत, Yes, sir. Yes, sir. अमित, शक्ल नहीं आ रही तुम्हारी। नीचे स्क्रीन नीचे या खुद ऊपर? अब तो 2-3 बार बोल दिया मैंने, लिख भी दिया था। और मुदित, वीडियो इज ऑफ। So just give me 5 minutes, sir. Actually, I'm not. पीयूष लोखंडे, व्हाट आर यू डूइंग? ये कहाँ की फोटो है ये? इतने अंधेरे में क्या करता है ये? ऑन करके चले जाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, हटा ही देना बेटर है। तो बेस थ्योरम, बेस थ्योरी क्लियर, चले आगे। चलो, करिस।
आंसर आ जाए तो भेज देना प्राइवेट चैट में। Did you understand the question? Did you understand the question? Right? The question is saying that I am throwing the die until sixes come up 3 times. Right? Just keep on throwing. What is the probability that in 5 tosses I'll stop? I will stop only if in the 5th toss I have got a 6. What about the remaining 4? I should have gotten 2 6s. The rest have to be non-6s, not 6 and not 6. Can I say this about the first 4 throws? Yes. Okay. So, what is going to be the probability that this happens? How will you go ahead with this question? क्या होगा मेथड? एक आंसर आ गया है। मेथड क्या होगा? पहले मेथड की बात कर लें। फिर एफपीसी से कर सकते हैं क्या? कैसे? तो मुझे लगता है 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल तो होती अरेंजमेंट के तरीके, जिनमें से एक लेट मी टेक एन एग्जांपल 6 6 5 4 6, ठीक है, ये एक ऑप्शन है जो हमें चाहिए। इफ यू आर अरेंजिंग देम, कैन आई से यू आर टॉकिंग अबाउट एन ऑप्शन व्हिच इज दिस, एंड इन दिस केस मैं तो थर्ड वाले पे ही स्टॉप हो जाता, 5 ट्राइज थोड़ी लगते मुझे, बट आई डोंट वांट दिस वन, सो आई विल नॉट डू 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल में तब होता है जब सारे लोग डिफरेंट हो, और यहाँ पे तो 3 लोग सेम है, और ये भी हो सकता है कि ये दोनों भी सेम हो, ये 5 5 भी हो सकते थे। सो इन फैक्टोरियल वाली कहानी नहीं चलेगी, कुछ और। देखो, प्रोबेबिलिटी निकालने के 2 तरीके होते हैं। 1, इंटेंडेड आउटकम्स
अपॉन टोटल आउटकम्स। इसमें इंटेंडेड आउटकम क्या है कि यहाँ 6 आ जाए, ठीक है, और पहले दो में दो 6 और दो नॉन 6s आ जाए, करेक्ट। कुछ कुछ होंगे आउटकम्स, ये कितने होंगे, जितने भी होंगे फैक्टोरियल वगैरह से कुछ हम निकाल लेंगे, राइट। तो वो इंटेंडेड आउटकम्स में आ जाएंगे। इसको डिवाइड करना है टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितने होंगे? बहुत सारे हो सकते हैं वो। तो my preference would be to not talk about intended outcomes upon total outcomes, rather talk about probability from the beginning. I mean probability for each instance. क्या मतलब? फर्स्ट पे 6 आया या नहीं आया, वो वाली probability। सेकंड पे 6 आया या नहीं आया, वो वाली probability. So in order to answer any question, what do I need? First of all, structure. My structure is, I will choose the two places for 6s. दो 6s डालने हैं मुझे। I will choose those two places. Once they have been chosen, let's say first and second, two have already been non-chosen. उन two में क्या आएगा? Will place non-6s in the remaining two places. ठीक है? Is this structure clear? Now, this structure can be used to find a probability directly. What does that mean? In how many ways can I choose the two places for 6s? How many ways? How many ways? Choose two places for 6. चार में से दो choose करने हैं for 6s. And how many ways can I do that? बोलो, शांत जाते हो। In how many ways can I choose two places out of 4? इसी का आंसर दे दो। So 4 factorial by 2 factorial. By 2 factorial again. By 2, हाँ, yes. 4C2. चार में से दो सिलेक्ट करने हैं, यही तो हो गया तरीका। 4C2. इन 2 में क्या रखा मैंने? इन दोनों प्लेसेस में आई पुट अ 6। 6 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, और दूसरी जगह पे आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/6। Are we clear? What has happened in the other two places? It is not a 6. What is the probability of that happening? Not a 6 is simply 5/6. Do we agree? बोलो, नॉट भी कर सकते हो। Yes, sir. Finally, the last place has a 6. उसके होने की probability 1/6. So you could have said that the answer is 6, 6, not 6, not 6, 6, which is 1/6, 1/6, 5/6, 5/6, 1/6, which is the latter part of this. But you also had to choose two places for the 6 to be held up, right? Alternatively, you could have said something like this. I have. अच्छा, ये आंसर समझ में आ गया। आगे मैं दूसरा तरीका बताऊं इसमें। You could have said that I am taking one of the options. What is the probability of this thing happening? It is 1/6, 1/6, 5/6, 5/6, and 1/6. Do we agree? This had been the probability if I had chosen one specific way of arrangement. But can I say I can arrange these people in other manner also?
wherein I will have to fix the last वाला 6. ये तो move नहीं करने वाला, but ये चारों move कर सकते हैं. So it would have been 4 factorial, but I have 2 6s that are same, so उनका arrangement should not matter. And also those non 2 6s, वो 4 5 आए या 5 4 आए, it does not matter. मेरे लिए तो वो non 6 है. They are not being differentiated. So this answer will get multiplied with this as well, which is nothing but 4c2 times this value. Either way, we'll get the same answer. Are we clear? Yes, no, maybe बोलो. मेरी काफी एनर्जी जाती है बात करने में. Yes, sir. तो एक्साइटमेंट कम हो जाती है. So Yes, don't sir. let it. Yes, sir. Next. What is the answer?
Any thoughts on the methods? कर लेना इसको, मेथड बताओ क्या कर कैसे रहेगा. हाँ भाई, बात करनी है, करना कैसे इसको, थोड़े आइडियाज तुम दो, थोड़ा मैं हेल्प करता हूँ. I'll wait. I'll wait. कोई थॉट्स? नहीं सर, समझ नहीं आ रहा. इतना ही है कि मतलब एक डिक्शनरी बना सकते हैं स्टार्टिंग से, जैसे ए के सारे कर दो, उसके बाद डी स्टार्ट करो, जब तक डिमांड नहीं आता. ये करना है. आपको वही सर, वो दोनों डी जो एक साथ है ना, वो वाले पे अटक जा रहे हैं, कैसे करना है. अरे क्या यार, तुम भी अब तो सारी कहानी कर ली. ये तो रिवीजन है. ये अच्छा मैंने लिखा नहीं है, ये रिवीजन क्वेश्चंस हैं सारे. अब तो ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स विल लुक समथिंग लाइक दिस. ठीक है, कितने हैं ये? इसमें डी डी ई एम एन ये सारे लेटर्स आएंगे. दीज आर 5 लेटर्स, 5 फैक्टोरियल, जिनमें से 2D की अरेंजमेंट, दोनों D को आपस में हटा देना है, 2 फैक्टोरियल. बट दिस डज नॉट मीन दैट MEDDN वाले लोग मैंने हटा दिए, राइट?
ये तो अभी सिर्फ वो अरेंजमेंट्स आए हैं, इनमें से माइनस करना होगा व्हेनेवर डी डी इज टुगेदर। Does that make sense? तो when will they be together? उनको एक साथ रख ही लो ना। अभी कितने लोग हैं? 4 ही लोग हैं। तो कहने से 4 फैक्टोरियल में ये लोग अरेंज हो सकते हैं इन विच डी डी विल ऑलवेज बी टुगेदर। तो वो फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल हटा दो इसमें से। दिस शैल बी द आंसर। और ए में कितने लोग हैं उसका आंसर है। दूसरा तरीका, अगर ये बहुत डाउटफुल लग रहा है तो ए से ए के बाद लेटर डी ही आएगा डिक्शनरी में भी, है ना? उसके बाद भी डी आएगा। पहला वर्ड तो यही बनेगा ना, फर्स्ट वर्ड। इसके बाद कौन सा बनेगा? एन एंड एम विल बी चेंज्ड, ऐसा ही तो। बेसिकली अगर मैं कहूं कि इन तीनों लोगों को अरेंज कर दें, इन तीनों लोगों को अरेंज करने के कितने तरीके हैं? 3 फैक्टोरियल बेस। बेसिकली मैंने ए डी डी डैश 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 की बात कर ली, इतने लोग हैं 3 फैक्टोरियल। अच्छा ए डी डी के बाद क्या आएगा? ए डी टी डैश डैश डैश, ये कितने लोग हैं? 3 फैक्टोरियल हैं। फैक्टोरियल। कहना से ये वाले 3 फैक्टोरियल मुझे चाहिए, ये वाले नहीं चाहिए क्योंकि इसमें डी साथ में आ रहा है। यस सर। ठीक है, ए डी के बाद क्या आएगा? ए डी एम, ये कितने लोग हैं? 3 फैक्टोरियल हैं, ये भी चाहिए। तो आई कैन से नॉट वांटेड, बाकी सब वांटेड है। सो ए डी एम के बाद ए डी एन, ये भी 3 फैक्टोरियल। अब ए के साथ डी की कहानी खत्म। और नेक्स्ट क्या आएगा? ए ई, और ई के बाद क्या आएगा? डी डी, पहला वर्ड यही होगा, नॉट वांटेड। तो कहना से इन लोगों की बातें कर लो, कितने? 2 फैक्टोरियल, दीज आर नॉट वांटेड क्योंकि डी टुगेदर है। नेक्स्ट क्या होगा? ए ई डी एम डैश डैश, ये 2 फैक्टोरियल, दीज आर वांटेड, इसमें डी साथ में नहीं है। देन व्हाट विल यू हैव? ए ई डी एम, ये भी 2 फैक्टोरियल, दीज आर वांटेड। अब ए और ई खत्म, अब ए और एम की बात होगी। कहना से कि ए और एम में वही कहानी होंगी जो इसमें ए और ई के साथ हुई थी, सेम रिपीट हो जाएंगी। तो उसमें एक 2 फैक्टोरियल नहीं चाहिए था, बाकी तो चाहिए था। तो 2 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल, कहना से दैट। सिमिलरली ए एन में भी आई हैव 2 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल। अब ए की कहानी सारी खत्म। आई विल मूव ऑन टू डी। डी के बाद सबसे पहले क्या आएगा? ए, फिर डी। कहना है जैसे ही ए आएगा, आई डू नॉट नीड टू वरी अबाउट कि आगे लोग कैसे अरेंज्ड है। 1 2 3 4 5, ये सारी 5 फैक्टोरियल लोग अपने आप में अलग अलग होंगे क्योंकि लेटर्स भी अलग हैं। यस सर। डी ए की बात करते हैं, 4 फैक्टोरियल बेस, ठीक है। डी ए के बाद क्या आएगा? डी डी, ये हमें चाहिए ही नहीं तो बात ही मत करो। डी ई, 4 फैक्टोरियल बेस होंगे, लेकिन डिमांड के लिए मुझे इसी में तो आगे घुसना है। तो डी ई के बाद क्या आएगा? ए। ऐसे कितने लोग होंगे? फैक्टोरियल। फिर डी ई ए के बाद क्या आएगा? डी ई डी, ये भी 3 फैक्टोरियल। फिर डी ई डी के बाद डी ई एम, इसी में तो आगे जाना है। डी ई एम, उसी में तो आगे जाना है। पहले आएगा डी एन और फिर आएगा एन डी, द वर्ड दैट आई वांट। So basically you can add 3 factorial 3 factorial 3 factorial 2 factorial 2 factorial, फिर ये लो,
फिर 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और ये एक वर्ड, जैसे ही ऐड करोगे यू विल रीच द वर्ड नंबर फॉर डिमांड। मेक सेंस? चेक करके बताना कितना आ रहा है। तो ये कर लेना इसको ऐड, जो भी आंसर आधा होगा दैट्स द वे टू गो अबाउट इट। लेट्स ट्राई दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। Again, I'm not focused on the answers, I'm focused on the method, so talk with me and tell me how you will approach it. ए को जीतने के लिए क्या चाहिए? क्या सर? ए हैज द फर्स्ट शॉट, तो अगर ए पहले में ही शॉट मार दे तो जीत जाएगा, या फिर ए ना मार पाए, उसको मैं स्मॉल ए लिख रहा हूँ कि ए हैज नॉट मेड द शॉट, बी हैज आल्सो नॉट मेड द शॉट एंड देन ए मेक्स द शॉट, तब भी ए जीत जाएगा। डू यू गाइस एग्री? या फिर A didn't, B didn't, then A didn't, B didn't, but then A did, or A didn't, B didn't, A didn't, B didn't, then A didn't, B didn't, and then A did, and so on. ये चलती रहेगी, कहानी लंबी है। What is the probability that A पहले में ही strike कर दे?
60%. 60%, 0.6 ले लेता हूँ, और मतलब प्लस हम्म, ए ना करे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.4, 0.4। फिर बी ने भी नहीं किया विच इज 0.2, 0.2, और फिर ए ने कर दिया विच इज 0.6 6। फिर और का मतलब प्लस। plus. अब ए ने नहीं किया विच इज 0.4, बी ने नहीं किया 0.2, फिर ए ने नहीं किया 0.4, बी ने नहीं किया 0.2, फिर ए ने कर दिया 0.6 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये है ना कहानी? Yes, sir. Is everyone clear with this? If I take 0.6 common, can I say it is 1 plus 4 2s are 0.08 है ये? इन दोनों का प्रोडक्ट 0.08। ये क्या है? 0.08 दो बार, 0.08 का स्क्वायर है ये, 0.08 स्क्वायर। फिर क्या होगा आगे? 0.08 क्यूब। GP आ गया सर. It is an infinite GP. If you guys don't know how the sum goes, it's basically the first value divided by 1 minus the factor. So that gives you 0.6 divided by कितना? 0.92. 3 by 46. Calculation सही है? Okay, sir. 60 by 92, 30 by 46, which is 15 by 23. There you go. ठीक है? Are we clear with this, guys? Try the next one. Yes, sir. अब आंसर्स भेजना चैट में, अभी क्वेश्चंस इजी होते जा रहे हैं।
So you have gotten an answer. बाकी सब भी भेज दो क्योंकि इजी ही क्वेश्चन है. जो आज पढ़ा है उसी पे भेज दो. All right. टेबल बना लेना. That tree. Do you want me to draw that tree? दो आंसर्स आ चुके हैं. I think those are correct. Let's try this question. How do you approach it? How will you approach this? करना नहीं है सॉल्व. बस मुझसे बातें करो अभी लास्ट के 15 मिनट में. सर फर्स्ट 3 डिजिट मल्टीपल निकाल लो. पहले तो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होता है उससे क्या होगा? सर एक स्ट्रक्चर टाइप बना पाएंगे. कैसा स्ट्रक्चर मतलब? सर मतलब जो वो नंबर्स लिखते रहेंगे तो जो 5 से भी डिवाइड हो रहा है 7 से भी डिवाइड हो रहा है क्या पता उनका कोई सीक्वेंस मिल जाए कुछ. पहला तो 105 है जो 7 से हो रहा है. नेक्स्ट क्या होगा? इसमें 7 ऐड कर दो. नेक्स्ट ऐसे करके चलते जाएंगे. कहां तक जाएंगे? 994 तक. तो इससे क्या पता चला अक्षत? सर अभी नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 आ गए. कितने 7 के मल्टीपल ही आ गए. ठीक है. अब इनमें से 5 के मल्टीपल कैसे मिलेंगे? 35 के मल्टीपल्स क्वेश्चन तो होंगे यही है वो. ना. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो क्वेश्चन क्या है. प्रोबेबिलिटी n is a multiple of 5 given that n is 7 का मल्टीपल. समझो क्वेश्चन. राइट. तो तुमने या तो 7 के मल्टीपल सारे निकाल लिए उसमें से 5 वाले ढूंढ रहे हो या फिर ये भी कह सकते हो ना n is a multiple of 5 and 7 divided by probability it is 7 का मल्टीपल. So 5 and 7 मतलब probability it's a multiple of 35 35. given it's a multiple of 7. ऐसे भी कर सकते थे. ओके सो लेट्स फाइंड आउट कि इनकी काउंट कितनी है. कितने लोग हैं ये? काउंट कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय D 7. 7 7 प्लस 1.
+1 क्यों? क्योंकि जैसे आपने माइनस किया है 105 को इंक्लूड नहीं किया, बट 105 तो खुद इंक्लूडेड है, तो उसके लिए ऐड कर देंगे। क्लियर? सो व्हाट डज इट कम आउट टू बी? 889 14 120 128 आ रहे हैं। Yes, sir, 128. So there was 128 which will become the denominator, right? उनमें से कितने 5 के मल्टीपल होंगे? वेल, ये 128 नंबर्स 7 के मल्टीपल हैं सारे, तो दे आर बेसिकली 7 into 105 कितना है? 15? नहीं, हाँ, फिर नेक्स्ट कौन सा होगा? 16, फिर 17, कहाँ तक जा रहे हैं ये? 7 into 128। क्लियर? ये सारे लोग हैं। I will have a multiple of 5 whenever 7 is multiplied by a multiple of 5, right? जैसे कि 15, नेक्स्ट कौन सा होगा? 16, 17, 18, 19, 20, फिर नेक्स्ट कब होगा? 21, 22, 23, 24, 25 एंड सो ऑन। दिख रहा है हर every fifth number is a multiple of 5. So out of these 128, if I am able to divide 128 by 5, what do I get? 5 2s are 10 और फिर 5 5 is 25. 25 3 by 5, ऐसा कह सकता हूँ। इट्स अ मिक्स्ड फ्रैक्शन कि भाई 25 लोग तो पक्का है, बाकी उन 3 का नहीं पता। वो 3 कौन से हैं? इफ यू थिंक अबाउट दिस, वो लास्ट के 3 है, ये 128 127 126। अब उन तीनों में से तो कोई भी 5 का मल्टीपल नहीं है, सो द आंसर इज ये 25 लोग ही हैं। कितनों में से? इन 128 में से। So out of these 128, I am concerned with only 25. So what is the probability? 25 over 128. ठीक है? Now the issue is this 25, if you think about this, all these 128 numbers have been divided by 5, right? So I have, okay, ये 5 5 5 5, the last 3 numbers, actually my bad, 25 के बाद 3 by 5 था ना ये, the last 3 numbers are basically these last 3 numbers. My bad. तो ये 5 5 के ग्रुप्स बनाए हैं आपने। द लास्ट 3 नंबर्स आर 125 126 एंड 127, जिसमें से 125 itself is also 5 का मल्टीपल। So this is not just 25 plus it becomes 26. Its total is 26, not 25. How many of you have attended numbers की class, by the way? Raise your hands. Numbers की class? None of you? अच्छा, तो उसमें हम ये बात करते हैं कि how many numbers are there between certain numbers which are multiples of others. तो अभी के लिए accept it at the face value. The answer is 26 out of 128, and more on this later in numbers. Let's try this interesting question. सर इसमें जो ऑर्डर है बर्थ का वो मैटर करेगा? पता नहीं यार, तुम बताओ।
ठीक है, बात करते हैं। अनुभव कैसे किया? सर वो समझ में नहीं आया ज्यादा, तो 3 बच्चे हैं, एक डॉटर होगी तो 1/3 होना चाहिए। क्या क्या? मतलब 3 बच्चे हैं ना इसके, तो एटलीस्ट एक डॉटर अगर होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1/3 होनी चाहिए ना। समझ नहीं पा रहा मैं। एक डॉटर होगी पर एटलीस्ट वन है, दो भी तो हो सकती है। हाँ वो सोचा नहीं। वो नहीं सोचा। अच्छा, अगर ओनली वन डॉटर होती तो 1/3 जैसा आंसर आ रहा है, ऑप्शन सी। महिमा, हाउ डू यू सॉल्व इट? तो पहले इसमें टोटल आउटकम्स मतलब सैंपल स्पेस बना लिया वो 3 वाला करके, फिर उसमें एटलीस्ट 1 होगा, दैट सैंपल स्पेस। इज जस्ट अ सेकंड। सर उसमें 8 आउटकम्स होंगे टोटल, गर्ल गर्ल बॉय, गर्ल बॉय गर्ल, देन ऑल गर्ल्स, देन गर्ल बॉय बॉय, फिर होगा बॉय गर्ल बॉय, देन बॉय बॉय गर्ल, बॉय गर्ल गर्ल एंड ऑल बॉयज। तो इसमें से सिर्फ एक है जिसमें एटलीस्ट 1 है, दैट मींस 1 एंड मोर देन 1, so that would be 1 2 and 3, so there's just one outcome where there's 0 girls, तो वो 7/8 हो जाएगा माइनस करके। शी इज सेइंग द आउटकम्स आर तीनों सन या दो सन एक डॉटर, दो सन एक डॉटर, दो सन एक डॉटर, ठीक है, 3 वेज। बेसिकली शी इज कंसिडरिंग द फैक्ट दैट सबसे बड़े वाला सन है, फिर बीच वाला सन और सबसे छोटी डॉटर, वर्सेस सबसे बड़ा सन, सबसे छोटा सन बट बीच वाली डॉटर, और इसमें सबसे बड़ी डॉटर और बाकी दोनों सन, ठीक है। ये तीनों केसेस अलग ले लिए हैं। नेक्स्ट, आई कुड हैव 2 daughters and 1 son, daughter son daughter, son daughter daughter, right? And finally you could have 3 daughters. तो ये कितने, 1 2 3 4 8 options I have in the sample space. Now she's saying that in 2 3 4 5 6 7 8, right? So the intended outcome is at least 1 daughter. कितने लोग हैं at least 1 daughter वाले? सर वो लास्ट वाला 7. केस तो नहीं होगा ना? हाँ, लास्ट वाला केस तो नहीं हो सकता? अभी अभी करते हैं ना। एटलीस्ट 1 डॉटर दिए थे, 7 पीपल। टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है? पॉसिबिलिटीज इज 8, so the probability comes out to be 7/8, which is option B. ठीक, लेकिन इसमें हमने अब वो अनुभव consider हाँ किया ही कुछ नहीं। कह रहा था कि भाई सैंपल स्पेस में लास्ट वाला ऑप्शन नहीं ले सकते बिकॉज इट इज गिवन कि एक बेटा तो है ही। सो एट लीस्ट 1 डॉटर, ये कितने केसेस हैं? 7 नहीं, वो 6, क्योंकि वो लास्ट केस पॉसिबल नहीं है। दिस इज व्हाट ही सेइंग, ठीक है। और टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है? टोटल पॉसिबिलिटीज सारी की सारी 8, so the probability becomes 3/4। 6/8 or 3/4, which is option D. ये सारे ऑप्शंस जो मैंने दिए हैं ना, सारे आंसर्स आते भी हैं लोगों के, वही मैं दिखा रहा हूँ। और किसी का कोई और आंसर? ये जो हमने तीसरी कहानी की है, तो जब ऑरेंज वाली कहानी बिल्कुल गलत है यार। देखो क्यों, एटलीस्ट 1 डॉटर, ये तो 6 केसेस हैं। टोटल पॉसिबिलिटीज कब होंगी? टोटल पॉसिबिलिटीज गिवन दैट 1 इज सन, सिंस 1 इज सन, टोटल गिवन, वो तो पॉसिबिलिटी 7 ही हो गई ना, डिनोमिनेटर हैज चेंज्ड नाउ, isn't it? So the probability will now actually become 6/7. ये 3/4 तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि it's a given probability, not a direct probability. So 6/7, 7/8, 1/3, 6/7 भी मुझे ऑप्शंस में डाल देना चाहिए। एक और मैं दिखा देता हूँ कहानी। The person has 1 son, ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि तीनों ही सन हो,
दूसरी क्या है, दोनों डॉटर हो बाकी, या फिर एक डॉटर और एक सन, यही तीन तो पॉसिबिलिटीज हैं इन व्हाटएवर ऑर्डर. Since I want at least one daughter, ये two, I want these two out of the total three possibilities. ये वही क्वेश्चन है शायद अक्षत ने शुरुआत में पूछा था कि does the order matter or not? If the order matters, guys, then the answer is this. If it doesn't matter, then the answer is this. सर लास्ट वाला नहीं समझ पाई, मतलब आप क्यों यही तीन लिए? ये इसलिए क्योंकि कहता है पर्सन के पास एक सन तो है ही, क्या वो सबसे छोटा है या सबसे बड़ा है या बीच वाला है, नहीं पता, तो लेट इट बी लाइक दैट. हम ये बोल सकते हैं इस इंसान के पास तीन सन है, तो एटलीस्ट एक सन तो है ही, वो रहा पहला ऑप्शन. इस इंसान के पास तीन बच्चे हैं लेकिन सिर्फ एक ही सन है, तो बाकी दोनों डॉटर. या फिर इसके पास सिर्फ मतलब दो सन है, तो टू सन्स वन डॉटर. यही तो तीन केसेस हैं पॉसिबल, इनमें से टू वाज टेकन टू बी द आंसर. तो बात इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सोचना इसके बारे में, मुझे बाद में बताना आंसर क्या सही है. ले लिया? यस सर. इसका भी ले लो. नेक्स्ट. 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 दैट्स इट. इन चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करके मुझे आंसर्स भेज देना. टेलीग्राम पे बात कर सकते हो तुम मुझसे. इफ यू डोंट हैव माय आईडी, इट्स सिंपली माय नेम. यू कैन फाइंड मी व्हाइल टाइपिंग without spaces with the rate sign. If you do this, you will find me for sure, and I make sure that I reply to all of you. So you can send me your answers here. We can discuss it later, and try practicing more questions on this topic. If nothing else, just revise the classes. FPC will be your best friend in such questions. Try certain questions from previous year exams, and if you have those doubts also, you can always meet me and talk to me. Okay? So we'll end this class. I'll see you in some other module. Bye guys. Good night. Thank you, sir. Thank you, sir.